नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुँच गोटे नुआ भिड को आपण मान आम ओडिया पाठशाला को स्वागत। आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर बहुत ही भल थे मु भी बहुत ही भल अच्छी। तो आमर क्लास 12 बायोलोजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो जाता चैप्टर टी जदि कहीं देखी ना तो चैनल को जाकि देखी दिंतु जानीपारे। तो चैप्टर जेहतु कंप्लीट होता मुझे भाविली कि NCERT सॉल्यूशन आग नहीं आस जहाँद्वारा आपण मैंने बेनिफिट्स पाइपर। तो जब चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ, सांग संग शेयर करूँ, बेल आइकन प्रेस करने जमा भी भूलें। मुझे भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तो आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो चलतु स्टार्ट करें आमर क्वेश्चन 1 ठू आरंभ करके केते पर्यंत अच्छी देखूँ। क्वेश्चन 1 ठू आरंभ करके 18 नंबर पर्यंत अच्छी। तो आज 9 नंबर पर्यंत करदे काली पुणी आउ थे 9 नंबर पर्यंत करदे। तो जेहेतु वीडियो लेंदी होती तो से 9 नंबर पर्यंत आज करुँची। तो आपण वीडियो कंटिन्यू देखो बुझीपारे। देखो क्वेश्चन 1 टा कौन अच्छी नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन व्हिच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स टेक्स प्लेस। कोठी आमर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट करती कौ जगार रुहति से को पचारि क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बाय माइक्रो गैमेटोजेनेसिस occurs in male in pollen sac of anther up to 2 cell stage। माने आमर आंथर रे थाए सेटा आ फीमेल गैमेटोफाइट मेगा गैमेटोजेनेसिस इन द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल। आम जो ओभारी थिला ओभारी भीतर जो ओव्यूल थिला ओव्यूल भीतर जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस भीतर थाए से न्यूक्लियस रे थाए कि आम फीमेल आउ मेलटा थाए आमर आंथर रे। बुझेला 1 नंबर। तापर से 2 नंबर रे कौन देछि differentiate between microsporogenesis and megasporogenesis, which type of cell division occurs during these events, name the structures formed at the end of the two events। कौन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो दी जनकर इवेंट पूरा एंड रे। डिफरेंशिएशन बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस कौन डिफरेंस तक भीतर रही। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल बाय मेयोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। से कहला कि फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल जो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होउतबो ताकू आउ जोटा कि मेयोसिस डिवीजन रे सेटा कौन कह ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल माने एटी मेगास्पोर फॉर्मेशन होतो माइक्रोस्पोर आ गोट ना पोलन ग्रेन्स मन रखिबो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल माने मेगास्पोर मदर सेल रू मेयोसिस डिवीजन रे यदि मेगास्पोर फॉर्मेशन होउची सेटा का मेगास्पोरोजेनेसिस कह जाउची। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन द आंथर व्हिच इज border knob like fertile part of the stamen। से कहला कि border knob like fertile part of the stamen रो जो fertile part अच्छी सेठी से होची कोन तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते आंथर रे। ओव्यूल्स आर formed in the ovary रे ओव्यूल्स बाहरिबो। all the 4 pollen grains that are found from the microspore mother cell are functional। चार्टा जाक जो पोलन ग्रेन रू बाहरिबो माइक्रोस्पोर मदर सेल रू सबुड़ाक फंक्शनल। ओनली 1 आउट ऑफ द 4 आ जो 4टा बाहरिबो से 4टा भितर केवल गोटे ही फंक्शनल मेगास्पोर इज फंक्शनल सॉरी 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक अच्छे। तापर से जो क्वेश्चन पचारा कि each microspore mother cell and megaspore mother cell contain 2 sets of chromosomes and are therefore diploid megaspores mother cell and microspore mother cell enlarge and undergo meiosis to produce 4 haploid cells called megaspores and microspores respectively। The chromosome number is reduced by half and therefore megaspores and microspores and haploid। Microsporogenesis and megasporogenesis is give rise to pollen grains and embryo sac respectively। Pollen grain is the male gametophyte and embryo sac represents the female gametophyte। ठीक अच्छे किछि नहीं इजी अच्छे सब गुड़ाक। Arrange the following terms in the correct development sequence। pollen grain sporogenous tissue microspore tetrad pollen mother cell male gametes। जेहेतु आग आसो कि ना स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक अच्छे। तापर पोलन मदर सेल रे कन्वर्ट तार माइक्रोस्पोर टेट्राड तार पोलन ग्रेन तार मेल गैमेट्स। ठीक अच्छे। एटा हो सारे सीरीज टा। क्वेश्चन नंबर 4
with a neat label diagram describe the parts of typical angiosperm ovule एटा एमती कर परिबो नले एमती भी कर परिबो ठीक अछि एमती भी कर परिबो ठीक अछि से सीधा करी देखै छै उल्टा भी बुक रे डायग्राम अछि उल्टा तो जेमती भी चाहिबो तमे कर परिबो ठीक अछि देखिबा एटा तर डायग्राम टा चलाजल न्यूसेलस sorry nucleus antipodals embryo sac secondary nucleus egg cell synergids outer integument inner integument micropyle funicle hilum rod fin आकड़ आउ ए जो भितर जोटा एटा हमें कंफ्यूज हेबनी जो आमे जो पढ़ी जो डेवलपमेंट हम सिनर्जिड थाए पोलर न्यूक्ली थाए एक्स सेल थाए फिलिफॉर्म apparatus थाए तो यही ता भीतर ओभारी स्ट्रक्चर भितर ये सब जदि करदेव ताले भल हम किछि नै असुविधा The typical angiospermic ovule is a small structure which is formed in the ovary. Ovule first develops as a projection on the placenta and composed of multi-layered cellular tissue called the nucellus. The hypodermal cell of nucellus enlarges and transformed into megaspore mother cell. The cell undergoes meiosis to produce 4 haploid cells only, one of which develops and forms embryo sac. Female gametophyte. An ovule may be surrounded by 1 or 2 protective layers called integument. तो जो बाहर जो दुटा प्रोटेक्टिंग लेयर अच्छी सेटा दुटा इंटेगुमेंट सेटा होची आउटर इंटेगुमेंट जोरा दुटा अच्छी आउटर गोटे इनर गोटे लिविंग ए स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड एंड टर्म एज माइक्रोपाइल छोट ओपनिंग जोरा सेटा होची माइक्रोपाइल एंड which acts as passage for the entry of the pollen tube into the ovule. Thus, a typical ovule consists of a fully developed embryo sac with the nucellus and integument. सेटा जो स्मॉल टिके छोट पोर बा कणा टाइप गोटे जोटा बाटटा अच्छी पैसेजटा अच्छी तो सेटा हेल्प करे कौन ना आम जो एंट्री करे आम पोलन ट्यूब जो आंथर आसिकी जो स्टिग्मा रे पड़ी जो पोलन ग्रेन जो पड़ी पोलन ट्यूब तार बाहर तो सेटा सी से पटे ही आसे माइक्रोपाइल एंड बाटे देकी तापर व्हाट इज मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कौन देखिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कौन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन मेनी flowering plants only one out of the 4 megaspores enlarges and develops into female gametophyte or embryo sac. The other 3 megaspores degenerate. This type of embryo sac formation is called monosporic development. ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ଆଉ ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଠି ଥିଲା कि कौन ना आंकर चारिटा जो मेल जो चारिटा फॉर्मेशन में मेयोसिस डिवीजन है कि चारिटा जाक फंक्शनल ठीक अच्छे किंतु फीमेल भी से चारिटा आसे किंतु भर गोटे फंक्शनल आउ सब डिजेनेरेट हो जाए बुझेगा सेटा को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह जाए तापर आसला 6 नंबर with a neat diagram explains 7 celled 8 nucleate nature of the female gametophyte माने रखो जो मु सेतळ कहउतली कि ओव्यूल स्ट्रक्चर भीतर जोटा करिया पई एटा होची से तार स्ट्रक्चर कोन कोन अछि देखिबा चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड एंटीपोडल्स फिलिफॉर्म apparatus synergids polar nuclei central cell egg देखो ये चलाजल एंड एंटीपोडल्स माइक्रोपाइलर पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल एग सिनर्जी फिलिफॉर्म apparatus तो यहाँ हूँ 8 न्यूक्लिएट किंतु 7 सेल कहीं कहुच्छी ना ये पोलर न्यूक्लिय दुटा जाक अच्छी गोटे नि जाऊँ ठीक अच्छे बुझीगला देखते embryo sac is formed by 3 successive mitotic divisions that take place in the nucellus of megaspore. The nucellus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. Okay.
तो ये थिला कौन embryo sac is formed by 3 successive mitotic division that takes place in the nucleus of megaspore. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming 2 nucleate embryo sac. Two more sequential mitotic nuclear divisions result the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryo sac. After the 8 nucleate stage, cell walls laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. 6 of the 8 nuclei are grouped together at micropylar and chalazial end and form the egg apparatus and antipodals respectively. The large central left over with 2 polar nuclei. Thus, a typical female gametophyte consists of 7 cells with 8 nucleus. बुझेला एटा होचर क्वेश्चन आंसर तो जे 7 नंबर को What is chasmogamous flower? Can cross pollination occurs in the cleistogamous flower? Give reason for your answer. Chasmogamous flower or open flowers in which anther and stigma are exposed for pollination. Cross pollination cannot occur in the cleistogamous flowers. These flowers remain closed, thus causing only self pollination. से मैंने सब क्लोज होकर थांते से मैंने पाखे अकर कर मैंने हो पारिबनी क्रॉस पोलिनेशन कहीं क्लोजिंग होकर थांती. इन क्लेस्टोग्लामस फ्लावर्स आंथर dehiscence inside the closed flowers, so the pollen grains come in contact with stigma. Thus there is no chance of cross pollination. Example oxalis viola. ठीक अच्छे 8 नंबर आसवा मेंशन 2 strategies able to prevent self pollination in flowers. Continue self pollination decreases the vigor and vitality of the particular race. Thus flowering plants have developed many devices to discourage self pollination to encourage cross pollination. Dichogamy and self fertility are two most common devices that ensure cross pollination. Dichogamy, maturation of anther and stigma at different times in a bisexual flower prevent self pollination. Self fertility, self sterility or self incompatibility. Due to the presence of self sterile gene in some flowers, pollen grains don't germinate on the stigma of that flowers. Example कौन tobacco potato. ठीक अच्छे. What is self incompatibility? Why does self pollination not lead to cell seed formation in self incompatible species? When the pollen grains of an anther don't germinate on the stigma of the same flower, then such a flower is called self sterile and incompatible, and such conduction is known as self incompatibility or self sterility. The transference of pollen grains shed from the anther to stigma of the pistil is called pollination. This transference initiates the process of seed formation. Self pollination is the transfer of pollen grains shed from the anther to stigma of pistil in the same flower, but in some cases, some flower self pollination does not lead to the formation of seed formation because of the presence of same sterile gene on pistil and pollen grain. तो यहाँ हूँ 9 नंबर आंसर ये कंप्लीट है. तो आउ 9टा आंसर आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा. तो ये जदि के स्क्रीनशॉट मारिबार अच्छे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मारी पार. तो जदि चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. वीडियोस को देखंतु कंटिन्यू पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु बुझी पारिबे. लाइक करंतु शेयर करंतु सांग मान संग जहाँद्वारा कि से बेनिफिट्स पाई पारे. से पर्यंत रोचे. धन्यवाद.